The economy cannot run in perpetuity with this kind of equation. So that equation, what is left behind in the middle is I, the investment piece. The commercial banker's training and the mindset is not beyond 1 year. या तो हम consumer को समझते हैं या हम corporate banking को समझते हैं. Businesses like SME and agriculture is beyond our understanding and comprehension. प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना आर्ग्यूमेंट को एग्जैजरेट करने के लिए उल्टे सीधे नंबर्स थ्रो करते हैं. पब्लिक सेक्टर को तो काम ही नहीं आता, ये तो होना ही नहीं चाहिए जी, तो बिल्कुल जरूरत नहीं. देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिसकी शायद अभी भी जरूरत है. द प्रॉब्लम with PICIC and NDFC and ZTBL has been the governance problem. वो कमर्शियल बैंकिंग में भी था. आपने वहां जब फिक्स किया है तो आपको यहां फिक्स क्यों नहीं कर सकते? We need to go beyond the IMF prescription to come out of the IMF program and graduate out of it like India did in 1993. अब कंपटीशन ये होता है in India कि मेरा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है या तुम्हारा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है. Not the fact कि मैंने जो है इतने पैसे खर्च करके आज लैंड क्रूजर ले लिए. This has to move away from this thing. Savings into the right scheme of things. And one of the forms of saving, to my mind, is the education of your children as well. The requirement for investment is so enormous that we cannot just rely on foreign investors alone, but we have to tap in the domestic investors as well. And my main focus today or discussion is what are the impediments for the domestic investors to be part of the whole equation. So starting out with the, basic economic equation, economic 101, which is, C plus G plus I plus NX, the GNP of any country. It's a mix of this equation. C being, household consumption, G being, the government spending, I is the investment piece, which we will be tackling today. And NX is supposed to be next exports, which we haven't seen in our lifetimes ever. So, in our case, this equation is very interesting. This equation, the first part is the one which is taking the entire burden of the growth, and the remaining two are actually pulling it off. And we talk about, what the investment number looks like, but the next net export number is negative. And that's obviously putting the pressure on the rest of the equation in terms of picking the burden for economic growth. And our economic growth tend to be then heavily dependent on the consumption side. And when I say consumption, it's both household as well as the government spending. To the extent that, the latest number suggests that our consumption number is 97.6%. And I'm borrowing these numbers from a latest brilliant article by Amar H. Khan. It's 97.6% of GNP. I mean, it's just not sustainable. It's impossible to sustain this. And if you look at, last 10-year number, it's around 92.8% of the GDP, and peaking in 2021, 22 to 99.6%. I mean, it's incredible, and this is mind-boggling. And the irony is that entire consumption piece is funded through the imports, not a sustainable model. We have to look at the aggregate supply to take care of our enhancement there, to take care of our consumption. Otherwise, relying on the imports is hitting a brick wall, which we've already done, by the way. And the economy cannot run in perpetuity with this kind of equation. And this is why we always see boom and bust cycle. So that equation, what is left behind in the middle is I, the investment piece. And that investment piece needs to be very focused and must be looked into. And I'm very glad that Dr. Saab has picked up this topic today because, to my mind, this is the one which can change this equation other way around, albeit in a
in medium to long term, but even then it will be worth it. The starting point should be to realize that this is the I piece. And I also, by the way, moving away from the consumption-oriented growth to investment-driven expansion. And that also, more focusedly towards, export industry. This is becoming even more of an issue with the increasing population. And with the increased population, there is an erosion of per capita income. And that per capita income is then resulting in more poverty and, of course, the macroeconomic instability. And therefore, the only way we can arrest this stagnation is focusing on the investments. But our investment to GDP ratio has been dismal. Averaged at 13% for the last 10 years. If I look at South Asia, we're talking about 30%. And if I look at even the low income countries, that's 28%. So our number at 13% is actually very scary. And long-term focus on investments cannot come through without a proper, industrial policy encouraging, of course, the export-oriented growth. So the starting point is that we need to have very focused, export-oriented, export-oriented, the industrial policy. And the requirement for investment is so enormous that we cannot just rely on foreign investors alone, but we have to tap in the domestic investors as well. And my main focus today or discussion is what are the impediments for the domestic investors to be part of the whole equation. While, there is a lot of value that the international investors brought to the table when it comes to country like Pakistan, especially in terms of training our people on the job and, transfer of technology. But then these investments, and we've seen that in the past, comes with bells and whistles. And we need to be very clear that those whistles are there, those bells are there. They are either implied in the form of political agenda, which may not, and most of the time they are not necessarily in our own interest. Or they're explicit in the form of outflow of FX over a period of the investment, and in the form of fees and similar sort of exchange requirements. So all in all, we need to keep in mind that there has to be a very good balance of the two. So domestic investors and international investor, we need to attract the international investment in a particular area where perhaps our own domestic investors need that support. And there too, by the way, our industrial policy should be driven in the direction where the foreign investors are encouraged to take our local domestic investors on board with them. There is a lot of talk about the importance of SIFC, or I would step back and include CPAC in there as well. Frankly, I am a big fan of both of them, because we have to keep the realities in our perspective, in our ground, in our view, while considering the facts on the ground. But then I also agree to an extent that this can't be a permanent solution. We have to institutionalize these things into our system. So temporarily, yes, we need that investment. We need that kind of support. We need that unity of command. But over a period of time, this has to be institutionalized in our system. Otherwise, this will not be sustainable. So that point is well taken there. But on the other hand, the domestic investors need similar support also. I mean, just CIFC or CPAC
alone, SIFC and CPAC alone, for foreign investors is fine, but as an institutionalization or a better functioning of board of investment is equally important, perhaps more important. And there's serious transformation required. You need to, do away with the institution and create a new entity altogether. Those are all debatable points. Whatever needs to be done, it has to be an empowered entity like the format of SIFC and CPAC. But the board of investment has to be transformed, primarily focusing towards the domestic investors. And then domestic investor does not come with the, similar sort of strings attached as we've seen in the case of foreign investors. So encouraging the domestic investment is the starting point and should be the preferred mode. Now, coming to the domestic investment, there are two pieces to this. One is the pool of investment which is available and why that pool is sort of is compromised or need to be enhanced and how it could be enhanced. And the second one is to channelize that pool from non informal sector to the formal sector, competing against the alternate investment options. So increasing the pool, the starting point is to increase the formal savings. In other words, that would also require the reduction in consumption, which means that you are talking about actually a change in the lifestyle of everyone. Everyone means everyone, and particularly the elites of the country. I know Dr. Saab is keep on talking about, how we have kind of, and I completely agree with him, how we have kind of encouraged that lifestyle through the various, the British. By the way, in Britain also, अब वो club business जो है ना, डॉक्टर साहब वो बड़ा shrink हो गया, छोटे-छोटे club रह गए वो. अब वो you pay for them, but in our case that's also subsidized, and I'll talk about it. In fact, I'll end my talk on what needs to be done on that subsidy piece. So that lifestyle change is necessary, and that for the biggest hit, of course, that night's lifestyle has to be taken by the elites. And not because of, look, मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं इस, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप ये बात करें कि मैं बड़ा पैट्रियोटिक हूँ, मैं बड़ा, और मैं एज अ पेट्रियट मैं ये काम करूंगा. फ्रैंकली स्पीकिंग, हर ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखती है और फिर किसी और को देखती है. तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मेरा आर्ग्यूमेंट हो, मैं उस आर्ग्यूमेंट को इस तरह बिल्ड करूं कि उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी आ रहा हो और लार्जर कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी जो है उसमें प्रोटेक्ट हो जाए. सो व्हाई आर द elites have to take a biggest cut in the equation? Because this is not sustainable anymore. And for the sustainability piece, if they have to continue with this kind of lifestyle, albeit a little compromise to begin with, then they have to make sure that they take that necessary cut at this point in time. So starting from the saving rates, the first and the foremost thing is that our incomes are very low. And if you look at our latest numbers, almost 50% of our population is below the poverty line. And that leaves a very small amount for them to save. And then that saving could be channelized towards, and that saving also, by the way, is mostly in the informal sector, not on the formal side. So even what is available out there, the income levels are so low that the formal savings are actually a fraction of whatever could be saved or channelized. The informal economy, as I alluded earlier, was also playing a major role in terms of attracting that savings towards the unrecorded and untaxed sectors, and not routing towards the formal banking system. And I'll talk about why that's happening. Limited access to the banking services. I'm very happy to be critical of myself and
my own community. We have restrict the ability of people to save securely. I don't think the focus of the banks is really there to attract the savings. And then the image of the banks need to be changed substantially as well. Right now, the bank, the impression of the bank is that it is for the elites. We have to move away from that concept. And we have to now look at encouraging the small savers to come into the system. This is for our own survival as well, trust me. I mean, there's an extent to which we can depend on the quantitative easing slash open market operation. Quantitative easing का जो basic concept है, और सलमान यहाँ बैठे हैं, he'll bear me on this, वो ये है कि आप private sector के अंदर encourage करें investment को. हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है. अब वो quantitative easing तो कर रहे हैं, but वो public sector के अंदर जा रहा है पैसा, वहीं से घूम के. This is not sustainable either for our industry, and we need to change that that thought process and the entire structure too. तो जब मैं डीजी था नेशनल सेविंग्स का डॉक्टर साहब, तो वहां पर बहुत डिबेट इस बात पे होती थी कि हमारी जो ब्रांचेस हैं वो उनको हमें एक स्टेटस बढ़ाना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए. मेरा वहां पर आर्गुमेंट जरा थोड़ा डिफरेंट था. मेरा आर्गुमेंट ये था कि उसकी बेसिक फैसिलिटीज आप जरूर रखें, मगर आप उसको प्लीज डू नॉट टेक इट द एसेंस ऑफ इट वेयर पीपल फील कंफर्टेबल कमिंग इन. सो मैं ये कह रहा हूँ कि एसी जरूर चलता रहे, फर्नीचर ठीक हो, लेकिन वो आदमी जो आपसे बात कर रहे हैं ना, आई डोंट वांट हिम टू वेयर और हर टू वेयर a uniform for that matter, because people feel more comfortable in coming to an organization where they can relate to people. And then we introduce the concept of from branches to community centers or centers to community centers. So it's more like a community center type situation where, you know, people will come, interact with each other, talk to each other. Achha, interestingly, in an organization like National Savings, वहाँ actually लोग socialize करने आते हैं. जो बुजुर्ग हजरात और खवातीन हैं, वो वहाँ पर आके actually मिलते हैं आपस में और वहाँ दोस्तियां हो जाती हैं. So we need to encourage. So that kind of change, shift in the mindset is required to attract investment in the formal sector. Financial literacy is a major deterrent. People are not aware of the, you know, saving culture, the products availability, making them comfortable in going through the formal savings process. And I think that is something which, although there is a lot of work going on in there, but perhaps it's not enough and more needs to be done. Then on our particular case, it's the cultural factor too, which comes at play. So, you know, there is a lifestyle, this thing. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे यहाँ हम इस बात पे बड़ा फख्र करते हैं कि हमने कितने पैसे खर्च किए हैं. हम इस पे फख्र नहीं करते कि हमने कितने पैसे सेव किए हैं. तो द डे हमारी मेंटेलिटी चेंज होगी फ्रॉम, यू नो, द फैक्ट कि वील टेक द प्राइड इन द फैक्ट कि मेरी सेविंग जो है वो इतनी है और मेरी कंजम्पशन कम है. I think that is the time when our society will change, and those cultural factors will come handy in terms of bringing that investment pool through savings too. फिर हमारे यहाँ, of course, there is inhibition against interest income, so that also keeps people away to keep this out of the system, the formal system. Elephant in the room is, of course, the negative interest rates. Our economists argue all the time that, you know, and it's the textbook, it's the pure economic textbook prescription that, you know, savings can only come or it could be only nurtured if there are positive interest rates. In my opinion, very humble opinion, I do not agree with that concept as far as Pakistan is concerned. Because the factors that I talked about earlier, the 4 or 5 factors that I talked about earlier, seems to be more overwhelming than the negative interest rate argument alone. And why am I saying this? What are the reasons for my argument on these lines? Because even when the interest rates were positive, which were very few times in the past 2 decades, but nevertheless it was there.
And when in the relative terms, the the return on the deposits or the formal investments were better than the informal investments. डॉक्टर साहब का एक और बड़ा फेवरेट वर्ड है प्लॉटिस्तान, और एफएक्स और गोल्ड फॉर दैट मैटर. जब उसके मुकाबले में भी हमारी वो बेहतर हुई है, हमने डिपॉजिट्स के अंदर इंक्रीज होते हुए नहीं देखा. इसका मतलब ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये आर्गुमेंट गलत है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो डिस्करेज करते हैं, बट खालिबन वो इतना ओवरवेलमिंग फैक्टर नहीं है इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि जो हमारा ऑब्सेशन है विद मॉनेटरी पॉलिसी की, सारी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में रेस्ट करती हैं, उससे जरा हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. दैट्स नॉट द केस. And then, there are other specific reasons of why domestic investments are lagging behind. So, ये तो मैंने आपसे बात की about the savings piece, कि वो क्यों पीछे रह गया. And now, what are the specific ones that we can talk about, on the domestic investment front, के जिसने थोड़ा सा इसको pull back किया हुआ है. If I look at the Heritage Foundation की, index of economic freedom, उन्होंने हर दुनिया की हर मुल्क की इकोनॉमिक फ्रीडम को गेज किया है इन 4 ब्रॉडर कैटेगरीज. सो स्टार्टिंग नंबर 1 फ्रॉम रूल ऑफ लॉ, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स, जुडिशियल इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट इंटेग्रिटी को कैप्चर किया. नंबर 2 साइज ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स बर्डन्स, फिस्कल हेल्थ एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. नंबर 3 रेगुलेटरी एफिशिएंसी, लेबर फ्रीडम, मॉनेटरी फ्रीडम, business freedom. Number 4, open markets, financial freedom, trade freedom, and investment freedom. Unfortunately, and then, उन्होंने 12 indicators जो हैं, ये सारे 4 की जो सब मैंने आपसे डिस्कस की, वो all put together वो 12 बनते हैं. उसको जब आप स्केल पे वो करते हैं, उसको 0 to 100, तो पाकिस्तान falls at 49.4 के नंबर के ऊपर, which is 152nd in 180 countries that they evaluated. I mean, this is shameful, to be honest. And I'm not surprised. It seems quite authentic to me. And एक थोड़ा सा जरा आप लोगों से on a lighter note भी एक चीज शेयर कर लूं, because मेरा उस पर बड़ा strong view है. वो ये कि जो 3 countries जो सबसे बड़ी IMF की बेनिफिशरी हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट और अर्जेंटीना. पाकिस्तान 152nd नंबर पे है, अर्जेंटीना जो है वो 144th नंबर पे है, और इजिप्ट 151st पे. तो that probably says something. Okay, so we need to be mindful of that. और मेरा आर्गुमेंट ये बिल्कुल नहीं है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, कि हमें IMF जो है वो कोई बहुत बड़ा ईवल है, और वो बहुत, उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है, उनका एक अपना ओरिएंटेशन है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. We perhaps respect their thought process and point of view, but we need to do more than what IMF is prescribing to achieve our own financial independence and economic independence, or the 4 areas or the 12 sub-constituencies that the Freedom Index talks about. उसके लिए हमें एक लेवल आगे जाना पड़ेगा. इसलिए मैंने पहले भी आपसे बात की, it's a lifestyle change. It's a change in giving away from our own benefits that we are getting right now. Then on the domestic side, जो बहुत बड़ा एक आपको deterrent नजर आता है domestic investment side, वो limited capital की availability है. So एक तो savings कम होने की वजह से वो capital कम नजर आता है आपको, मगर उसके अलावा ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. और अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो वो वहां पर हमें ये नजर आता है कि वहां पर these funding have played a major role in terms of encouraging entrepreneurship, domestic investment. Or interestingly enough, even in the countries like USA, which is the Mecca of capitalism, the encouragement for venture capital and startup funding came from the government. And then subsequently the banks
उसको हम बैंक्स जो हैं वो उठा के ले गए आगे। मैं अभी कल ही देख रहा था कि उन्होंने ये जो है आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर $500 मिलियन का फंड जो है वो जेपी मॉर्गन ने कमिट किया है। And then there is similar commitments coming from HSBC and the other institutions as well. But the starting point for that were the governments. And in our case, I think वो fiscal space में क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम वो कर नहीं पाते, बट हमारी शायद प्रायोरिटीज भी ठीक नहीं है, और मैं उस पर भी बात करूंगा कि हमें प्रायोरिटी अपनी ठीक करके और वो वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप फंडिंग जो है वो अवेलेबल करनी पड़ेगी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। दोबारा मैं बिल्कुल इस पे कोई मुझे आर नहीं है टू क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स एंड माई सेल्फ। द बैंकिंग इज community is also not playing their due role in terms of making that kind of funding available for domestic investors and entrepreneurship. अब उसमें थोड़ा सा जो एक फैक्टर है वो ये भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके मुंह को अफीम लगा दी है in the form of government investments which are risk free and you are getting a very decent return on this, तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप एक्स्ट्रा रिस्क लें और जाके हाई रिस्क बिजनेसेस के अंदर जाएं और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर चांसेस लें when you already get a decent return here and the phenomenal profit that you're posting every year. बट उसका एक साइड इफेक्ट बहुत मेजर ये है कि जो ट्रेनिंग है बैंकर्स की वो भी अब नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन। सो अगर ये ओवर अ पीरियड टाइम, और ये हमारे सामने हुआ है, मुझे अब बैंकिंग में 30 साल हो गए, मैंने ये इरोजन अपने सामने देखी है अनफॉर्चुनेटली, कि जहां पर वी यूज्ड टू वर्क एन एक्स्ट्रा माइल, जब गवर्नमेंट की बोरिंग इस तरह नहीं होती थी और इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती थी, टू मेक श्योर कि हम रिस्क मिटिगेशन के स्ट्रक्चर्स ढूंढ के लाएं और नई फंडिंग को सोर्सेज को लेके टैप करें। Those have disappeared unfortunately, and that is also one of the reasons why there is a limited funding available. Unlike our conventional economist point of view, कि जी वो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन नहीं होने चाहिए, आई एम सॉरी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे ख्याल से स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशंस आर द नीड ऑफ द आवर। उसके आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आप देखिए जी एनडीएफसी के साथ क्या हुआ, पिकी के साथ क्या हुआ, एडीबीपी के साथ क्या हुआ, या जेटी बिल जिसको हम कहते हैं उसके साथ क्या हुआ। मेरा उस पर जो आर्ग्यूमेंट है, काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो ये है, यू आर थ्रोइंग बेबी विद द बाथ वाटर। आप ये भी तो देखें कि उन लोगों ने क्या रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड उसके दो रीजंस हैं, एक तो एलोकेशन ऑफ कैपिटल होती है फॉर दैट स्पेशलाइज्ड सेक्टर, प्लस एक्सपर्टीज डेवलप होती है। तो ये दोनों जो डेफिसिट मैंने आपसे भी जिक्र किया बैंकिंग की, यूनिवर्सल बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो जब तक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं होंगे, वी विल सी सम काइंड ऑफ चैलेंज फॉर द domestic investment to come through. Then of course the second one is the policy uncertainty, and we are all aware that frequent changes and political instability leads to discouraging the domestic investors to come into aggressively on the investment side. अच्छा, interestingly होता ये है कि because you have institutions like CPAC and all, and these foreign investors are generally very influential through their embassies, through their international cloud, being multinational. They have lots of influence. Those domestic guys, unfortunately, do not have that kind of clout. And they remain on the receiving end of any of these, government के frequent changes in policies and all. हमारे पास बड़ा सीरियस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, पावर शॉर्टेजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क कम है, and that all adds up in terms of operating cost, and then the return does not become attractive enough, particularly in comparison to the informal sector में जो investment opportunities आपके पास हैं, more speculative in nature than going and taking a chance on a risky investment and having a adequate compensation for it. There is bureaucratic red tape, जिसके लिए मैंने पहले भी गुजारिश की कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम इंस्टीट्यूशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को टैप करने के लिए। लेंथी एंड कम्बर्सम प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, all of them adds up. And then of course because of the informal sector there is
there is a disincentive for people to come into formal investments. So हमने देखा अभी डॉलर होल्डिंग को, हमने देखा रियल स्टेट के अंदर प्लॉटिस्तान, हमने देखा गोल्ड के अंदर, those are considered to be much more safer investments with better returns in comparison to the traditional, banking or formal investments. And then, there is disincentive for people to go for formal or documenting the income and savings as well. और वो कैसे हो रहा है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपने डिसाइड किया एज अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर कि आप आ रहे हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू इन्वेस्टमेंट, बट जो काउंटर पार्टी आप डील कर रहे हैं वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक्टिविटीज को अनरिपोर्टेड रख रही है, तो वहां पर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा in terms of convincing them to be part of the documentation process. Multinational still, by the way, by the quantum of their, investment, can dictate those terms, and we've seen that ourselves in these जो बड़ी FMCGs हैं कि इन्होंने dictate किया है companies को कि वो documentation रखें, but for domestic investor that might and clout is not there. या तो आपकी investment का quantum इतना बड़ा हो कि आप dictate करा सकें, या आपको खुद भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, you have to cut the corner somewhere. Then of course there is regulatory complexity. मैंने आपसे जिस तरह गुजारिश की कि फॉरेन इन्वेस्टर को तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं, बट जो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है वो बेचारा सफर करता रहता है बिकॉज ऑफ दिस. और सबसे जो सफरिंग है, और मेरा वो बड़ा उस पर वो है, वो ये कि जो जेन्युइन बिजनेस करने लगता है और जेन्युइनली टैक्स पे कर रहा होता है, उस पर सबसे ज्यादा हरासमेंट होती है. Harassment by the regulatory authorities, harassment by the revenue authorities, provincial, by the labor authorities. वो harassment का piece जो है ना, वो भी एक reality है, and वो तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक we have for the domestic investors as well a local SIFC type structure. एक और जो बहुत बड़ा element है वो ये, और जिस तरह हमने equation देखी अपनी, वो C plus G plus I plus NX, उसमें जो second piece है वो G का piece है. हमारे वो जी का पीस भी बहुत बड़ा है, तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पीस है दैट इज आल्सो वेरी बिग. और इस पे भी मेरी डॉक्टर साहब की बड़ी तफसीली बात हुई थी कि जी के ऊपर जो हमारा आज नंबर आ रहा है वो पीएसडीपी का, वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन है. इट्स अ सब्सटेंशियल, ऑलमोस्ट 10% ऑफ आवर टोटल बजट साइज, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज which essentially there is inefficiency, there are leakages. And that particular piece has to encourage the public-private partnership to rope in the domestic investors to be part of the government in these investments. And that public-private partnership framework is very weak, and that needs to be strengthened and improved. At the end, obviously, these are complex issues with far-reaching consequences. But just to recap of what we've talked about today, there has to be fully encompassing industrial policy driving towards export industries, and the ultimate objective should be to achieve export surplus. This could be agriculture to IT to our conventional the textile industry. But on the other side, it's also an सलमान यहाँ बैठे हुए, इन्होंने एक दफा मेरी करेक्शन की थी, तो उसके बाद से मैं बड़ा केयरफुल हो गया हूँ उसको यूज करने में वर्ड को. So I will not talk about import substitution. I have started calling it imports indigenization. Because वो पर उसकी connotation बड़ी different हो जाती है. And thanks Salman for correcting me on this one. So import indigenization, especially in the area of oil and gas exploration, अब हम mining की भी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों equations have to work together, and वो fully encompassing industrial policy has to be driven in that direction. Financial inclusion at the back of digitization. मैं कुछ ज्यादा मुझे पसंद नहीं है इंडिया की एग्जांपल्स कोट करना, बट कोट करनी पड़ेगी. आधार है, बाय द वे आधार जो है ये हमने बहुत पहले नादरा अपना बना लिया था, but the way they are projecting it as if they are the ones who invented this in the world, that is not true.
We were the one who took the lead, but perhaps they have taken a step further ahead of us in terms of digitizing it, and we are kind of lagging behind in that one. And we need to now make sure that all our sectors which have the database available have the data sharing arrangement. For example, my most favorite these days is an argument that, with NADRA, you should have organization like State Bank of Pakistan. You should have PTA. You should have, so that telecom data can be accessed. You should have OGRA, so that the gas connection consumers data can be harnessed, and then you have NEPRA, which has the access. In fact, NEPRA se zyada there's another entity which NEPRA can actually access as a regulator, which is Power in IT something company. They have that consumer data for electricity as well. They need to share the data with each other. And that data will help you in increasing not only the number of taxpayers. फिर वो एक बड़ा पुराना आर्गुमेंट है कि हमें फाइलर नॉन फाइलर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. आपका फाइलर का नंबर बहुत बढ़ जाएगा अगर आप वो डेटा शेयर करें और मैंडेटरी फाइलिंग कर दें फॉर दीज कनेक्शंस एट लीस्ट, and start penalizing, cross penalizing people for default on each other. जिस तरह हमारे पास बैंकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक CIB का फॉर्मूला है, उसी CIB का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए आप उसके अंदर बाकी डेटा भी डलवाएं, टेलीकॉम का भी, टैक्स का भी, गैस का भी और बिजली का भी, और फिर जहां जिसका कनेक्शन जो है जिसने डिफॉल्ट किया हुआ है उसको सबको पेनलाइज सब जगह पे करें. अगर किसी ने जो है वो गैस का बिल नहीं दिया हुआ तो उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलना चाहिए. और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा नादरा अनफॉर्चुनेटली इस माइंडसेट में आ गया कि इट्स बिकमिंग अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन. वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट. इट्स a utility, and utilities are not necessarily have to be a profit making. They have to cover their losses, which is fine, but it has become very expensive for even the other institution to access their database, which is not the idea. Policy stability, जिस तरह हमने बात की, बहुत controversial point है, but nevertheless this is one aspect that we. अच्छा देखिए, मैं इस पे आपसे गुजारिश करूंगी, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ बिजनेस की हम बातें करते हैं, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चार्टर है ना, वो ये पॉलिसी स्टेबिलिटी में आएगा. वो चार्टर आता है फ्रॉम पीपल्स डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स. तो अगर हमारी डिमांड और रिक्वायरमेंट जो है, हमारा आपस का चार्टर, आई वुड से चार्टर ऑफ सोसाइटी, वो ये है कि ये चीजें आपने करनी है, देयर हैज टू बी पॉलिसी स्टेबिलिटी. तो उसके ऊपर हर स्टेक होल्डर जो है वो कुछ भी टेम्पर करते हुए 6 दफा सोचेगा और ट्विकिंग विल नॉट बी पॉसिबल. Infrastructure development, need of the hour, PPP is the name of the game there. We need to get involved more into this and get more open-minded about it. Regulation simplification, हमने ऊपर बात की इसके ऊपर. And then of course the formal savings and investment incentives need to be aligned with our overall objective. मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे कि अभी रिसेंटली जो हमने देखा है कि एक एलिमिनेशन ऑफ स्मगलिंग और होर्डिंग हो रही है, जिसमें जो वो डॉलर होल्डिंग भी है, रियल स्टेट भी है, गोल्ड भी है, उसको क्रैकडाउन हुआ है. अब हमारे लिए जो अगला चैलेंज है वो ये कि इसको हमने किस तरह प्रोडक्टिव सेक्टर में लेके आना है. एट दिस पॉइंट इन टाइम, अब कल भी बड़ी इस पर डिबेट हमारी होती रही एक और फोरम के ऊपर, कि अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं कि जहां हमने क्रैकडाउन कर दिया है, बट इसको हमने किस तरह प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर लेना है, दैट्स अनदर क्वेश्चन. बिकॉज आइडियली तो हमें एमनेस्टी अनाउंस करनी चाहिए और लाना चाहिए उसको, but IMF हमें अलाउ नहीं करता कि हम एमनेस्टी ला सकें. So we need to be more creative about it and see how we can channelize that funding into the system. Frankly, I don't have an answer to that. And it's मेरा तो यहाँ रखा हुआ है फोन. And then there is and this is again my favorite topic. It's again my favorite topic. There is a concerted effort required on the part of the government, private sector, and social civil society. And जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, civil society का role बहुत important है in terms of creating that pressure group.
The functional word, and I am a big supporter of this, a functional word is balancing act and optimal level of utilization of our policy making as well as our ideas and thoughts. And that includes both markets and regulations as well. There has to be an optimal balance between the two. Either extremes are bad. अगर हम आज मार्केट को पूरा खुला छोड़ देंगे तो वो भी खराब है, और अगर हम ओवर रेगुलेशन कर देंगे तो वो भी खराब है. And that optimal level is something which will help us in harnessing that investment, particularly from the local. हमारा डायलेमा ये है कि हम अभी तक ये नहीं अपने आप को रिकंसाइल कर पाए कि हमने कितना मार्केट को लीवे देना है और कितना हमने रेगुलेशन करनी है. और ये दिस होल्ड्स ट्रू फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिस्कल अकाउंट टू एक्सटर्नल अकाउंट टू मॉनेटरी पॉलिसी. हर जगह पे हमारा यही डायलेमा है कि उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क आ रहा है. मार्केट्स आर नॉट परफेक्ट. दे आर अ कलेक्शन ऑफ पीपल. They have their own flaws, biases, and imperfection. Markets aren't perfectly efficient either. So the role of regulator is inevitable. We need to understand this. मैं आपसे जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक narrative create किया गया है. Market knows everything best. Market is the most smartest of everything. I'm very sorry, I don't agree with this. It has to be a very good balance of the two. So we understand that market has the realities and it understands everything. It has its own this thing, but the regulation has to be there in order to avoid exploitation and distortions in the market. But on the other hand, the regulator also has the responsibility to making sure that they don't over-regulate, and there has to be a level playing field, promote competition, and they have to maintain the necessary order in the market, not regulate the market too much. It's not just the recomposition of the economy, it's the reprioritization of the whole society and its habits really. Subsidy mechanisms need recollaboration to eradicate rent seeking and move towards export-oriented, market-driven industries through domestic investments. That's what my nutshell message for today is. Thank you very much. Thank you, sir, for enlightening us. सर आप जो है स्पेशलाइजेशन की बात करें, जैसे ZTBL की आपने बात की कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो स्पेशलाइज्ड काम करें, तो सर अगर हम देखें तो SMEs जो हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर होती हैं और उनकी ही अभी जो कैबिनेट जो है फेडरल कैबिनेट अभी 2023 में SME बैंक थी 2000 से उसको ही ख़त्म कर दिया और अब उसके बहुत सारी ब्रांचेस फैसलाबाद और वो सब खत्म कर दिए. SMEs जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो बॉटलनेक है वो फाइनेंसिंग का है. तो वो सर हम SMEs जो के लिए बैंक्स बनाए उनको ही खत्म कर रहे हैं. तो सर आप क्या देखते हैं कि किस तरह का फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इन SMEs को जो है वो ग्रो कराया जाए? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल देखें साउथ कोरिया, बांग्लादेश, तो उन्होंने उनकी SMEs में मेजर कंट्रीब्यूशन किया उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो सर आप इस पर कॉमेंट करते हैं. देखिए बात ये सर अब्दुल करीम फ्रॉम BOI SME स्पेशलिस्ट. ओके, देखिए बात सुनिए, मेरा तो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है. मैं तो आई डोंट एग्री विद दिस. द SME इंस्टीट्यूशन शुड हैव बीन देयर. अब मैं आपको उसके रीजंस बता देता हूँ व्हाई. बात ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल बैंकिंग और स्पेशली हमारे यहाँ क्या कॉम्पोजिशन क्या है बैंकिंग का, इट्स प्रीडोमिनेंटली कमर्शियल बैंक्स. द कमर्शियल बैंकर्स ट्रेनिंग एंड द माइंडसेट इज नॉट बियॉन्ड 1 ईयर. हम सोच ही नहीं सकते 1 साल से बियॉन्ड, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग ही वो नहीं है. एंड व्हेन यू टॉक और हमारी जो ट्रेनिंग है वो हम एक सर्टेन वे में कंडीशन हुए होते हैं. या तो हम कंज्यूमर को समझते हैं या हम कॉर्पोरेट बैंकिंग को समझते हैं. Businesses like SME and agriculture is beyond our understanding and comprehension. अच्छा, यहाँ तक बात सिर्फ खत्म नहीं होती. मुझे तो ये भी याद अच्छी तरह पड़ता है कि शुरू में जो ये लार्जर इंस्टीट्यूशंस थे लाइक सिटी बैंक एंड ऑल, मैं आज से 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जब उन्होंने कंज्यूमर बैंक लॉन्च किया था, इट वाज अ सेपरेट बैंक ऑल टुगेदर. कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक वाज अ सेपरेट बैंक. और हमारी सिचुएशन ये होती थी, आई एम अ सिटी बैंक प्रोडक्ट, हमारी सिचुएशन ये होती थी कि हमें दूसरे बैंकों में पता होता था कि वहां पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कौन है, हमें ये नहीं पता होता था कि हमारे यहाँ कंज्यूमर बैंकिंग में कौन है, और हम उनके साथ काम नहीं करते थे. Why? Because the mindset was very different.
the requirements were very different. And अगर आप आज हाउस करने की कोशिश करेंगे एसएमई को या एग्रीकल्चर को फॉर दैट मैटर under a universal commercial या consumer banking setup, then it will always be um, uh, at an inferior position. Because हम वो समझते ही नहीं है बिजनेस, हम वो समझ सकते नहीं है. और अगर हमें भी ये बिजनेस करना है तो हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन करके इसको सेपरेटली रन करना पड़ेगा. We can't run this in the same infrastructure with the same mindset, with the same systems and processes. So therefore, specialization, either encouraging the banks to do it or to having a specialization institution. I'm very clear on this, which is required. देखिए आर्गुमेंट क्या आता है? आर्गुमेंट ये आता है कि जी आप ZTBL को देख लीजिए, क्या उसके बाय द वे एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो उल्टे सीधे नंबर कोट करते रहते हैं. उन्होंने कह दिया कि जी बैंक ऑफ पंजाब का जो वो है डिफॉल्ट रेट है पता नहीं 17% है क्या है वो. हमारे एक वहां पर डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज में, उनका मेरे पास फोन आया, कहने लगा भाई ये 17% कह रहे हैं. भाई इट्स 6.5% which is lower than the average of the industry. So हम प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना आर्ग्यूमेंट को एग्जैजरेट करने के लिए उल्टे सीधे नंबर्स थ्रो करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम दूसरी तरफ बिल्कुल उस तरह ट्रिल कर देते हैं कि जी पब्लिक सेक्टर को तो काम ही नहीं आता, ये तो होना ही नहीं चाहिए जी, तो बिल्कुल जरूरत नहीं. मैं ये बिल्कुल नहीं, देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिसकी शायद अभी भी जरूरत है, मगर आपको स्पेशलाइज, मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्पेशलाइजेशन जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए. Perhaps as a PPP you can do it as well, but the specialization institutions are necessary and required. The problem with PICIC and NDFC and ZTBL has been the governance problem. It is not the business model problem per se. And वो गवर्नेंस प्रॉब्लम जो था वो कमर्शियल बैंकिंग में भी था. आपने वहां जब फिक्स किया है तो आपको यहाँ फिक्स क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपकी मोटिवेशन नहीं है. रेगुलेटर अगर उसको कल को हेड ऑन ले लेता है और रिजॉल्व करने का की कोशिश करता है तो वहां पर भी सिचुएशन चेंज हो सकती है. सो आई डोंट अग्री विद दोज आर्ग्यूमेंट्स, ये तो देखे ना जी पास्ट में इस तरह हुआ है और ये चल ही नहीं सकता. नो, इट्स अ गवर्नेंस इशू. बाय द वे गवर्नेंस इशू पूरे मुल्क का है. And we cannot just garb our arguments under a previous governance flaws one way or the other and try and win the argument. सर कल एक डिस्कशन जिसे हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स या रेगुलेशंस की बात कर रहे थे और आपने भी बैलेंस की बात की है, क्योंकि कल के जो प्रेजेंटर थे उनका कहना था कि जितनी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं इसका मतलब ये मार्केट कैप्चर ही है. तो एक तो सर इस बैलेंस पे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह इसको कर सकते हैं. सेकेंडली आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बट आपको जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या पॉलिसीज होती हैं IMF की तरफ से, तो पाकिस्तान सर कैसे टैकल कर सकता है? बिकॉज अच्छा देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट तो जो आपने जिस तरह फरमाया कि वो बैलेंसिंग एक्ट किस तरह आ सकता है. सो बैलेंसिंग एक्ट इस तरह आ सकता है कि आप you let the market operate, but when you as a regulator see कि वहां पर डिस्टॉर्शन हो रही है और वहां पर जो है वो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, then you have to intervene and make sure that distortion and intervention does exploitation doesn't happen. मैं आपको बहुत एग्जांपल्स कोट कर सकता हूँ कि जहां हमने मार्केट को रूम दिया और मार्केट ने उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया. अगर ये लाइव नहीं जा रहा होता तो मैं आपको देता, अभी हमारा ये सेशन खत्म होता है तो मैं आपको एक्चुअली नंबर्स भी बता दूंगा और एक पर्टिकुलर सेक्टर का भी बता दूंगा किस तरह उसने मार्केट को एक्सप्लॉइट किया था और क्या रेगुलेटर को वहां करना चाहिए था. आई डोंट वांट टू एम्बैरेस दैट पर्टिकुलर सेक्टर. सो इट हैज टू बी अ वेरी गुड बैलेंस. मेरी हद तक वो बैलेंस कब आएगा कि जब उसका जो उसकी जो you let the market operate, but only to the extent of avoiding the distortion and the exploitation of the consumer. This is what the principle should be. अब देखें ये बड़ी broad term है और इसको जो है ना वो इसको हम कई तरह से इसको हम interpret कर सकते हैं. Frankly speaking, इसको हमें interpret इस तरह करना चाहिए कि it has to be a value proposition for the businesses. तो हम उनको इतना भी रेगुलेट ना करें कि उनके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म हो जाए.
और अब उनको इतना भी अलाउ ना करें कि वो ओवर द टॉप रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी बनानी शुरू कर दें, जो परहैप्स आर नॉट नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड। जो दूसरी वाली आपने बात की, देखिए हमें इस रियलिटी के साथ अभी रहना पड़ेगा कि हम IMF प्रोग्राम में हैं और हम रहेंगे। There is no quick way out of this program, and this is okay as well. As far as I am concerned, this is fine for the time being. But मेरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कह रहा हूं कि जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है, हमें उसकी प्रिस्क्रिप्शन से आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, IMF आज के प्रोग्राम तक, आज तक पेंशन फंड को इंक्लूड नहीं करता। पेंशन फंड इज अ मेजर ड्रेन on your fiscal account. I think you need to do more there than what IMF is prescribing. For example, IMF does not encompass the provinces in their scheme of things, especially on the taxation side. और जो 3 बड़े सेक्टर पीछे रह गए हैं, वो overwhelmingly domain में fall करते हैं of the provinces. So we need to go beyond the IMF prescription, and we need to make sure that we do all which is necessary to come out of the the IMF program. I don't want to use any other word, and graduate out of it like India did in 1993. 1991 में प्रोग्राम में आए, 93 में वो ग्रेजुएट कर गए। हमें भी उस तरह, क्योंकि they went a level further. There was a lifestyle change. मैं आपसे, मुझे अभी कोई परसों तरसों बता रहा था कि, and what a fascinating example, कि अब कंपटीशन ये होता है इन इंडिया कि मेरा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है या तुम्हारा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है, because the education has become such an important element into the overall scheme of things that they take the pride in the fact कि मेरा बच्चा जो है ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है, not the fact कि मैंने जो है इतने पैसे खर्च करके आज लैंड क्रूजर ले लिए। because हमारा जो वो कंजम्पशन वाला पीस, जिस तरह मैं कह रहा था, it has to move away from this thing and is savings into the right scheme of things. And one of the forms of saving, to my mind, is the education of your children as well. It's a qualitative piece, but that is necessary for the future investment. You're investing for the future of your अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप, और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए मेरे ख्याल से एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सेविंग्स। Thank you so much, Zafar sir. A very enlightening talk. Couple of points. एक तो on a lighter note ना, वो जो आपने smugglers के और hoarders की बात की, मैं भी article भी लिखा है in praise of smuggling actually. I find these hoarders and smugglers as a source of information, right, for policy distortion. Yes. जिन sectors में smuggling ज़्यादा हो रही है, हमने वहाँ पर कोई policy में steps किए हैं, yes, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये प्रॉब्लम्स हर दफा नहीं थे। 1.5 मिलियन टन शुगर में से अगर हमने 10,000 शुगर कहीं से टन बराबर कर लिए तो हम कह रहे हैं कि हमने बड़ा वो कर लिया। इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व। नहीं, वो भी बाय द वे डाइवर्ट हो जाएगी, बिकॉज मैं भी किसी शुगर बैरन के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया नंबर कि देखें 140 में जब आप करेंगे तो फिर ही एक्चुअली कोटेड द नंबर्स टू मी कि कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे ऑन द इधर के बॉर्डर पे और उधर के बॉर्डर पे। तो मुझे फिर भी जो है ना, वो अफगानिस्तान में 240 रुपए बिक रही है, मुझे लैंडेड कॉस्ट में 210 मिलेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 140 आप ले आए। शुरू से ये कहते रहेंगे आप शुगर की ट्रेड को ओपन करते हैं तो स्मगलिंग खत्म हो राइट। इट्स टू वे। बट वो जो आप कहते हैं ना मार्केट्स का एक डोमिनेटिंग नैरेटिव है, उसमें थोड़ा सा मैं डिसएग्री। आई थिंक डॉक्टर नदीम आल्सो हैज सेम ओपिनियंस कि हमारे यहाँ तो मार्केट्स उस तरह डोमिनेट नहीं करती, ओपिनियंस में, नैरेटिव में एक्चुअली नहीं करती। ज़्यादातर तो वो एक स्टेट है या गवर्नमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग है, जो कि फ्रैंकली मोस्टली इकोनॉमिस्ट की और जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स है वो उसको ड्राइव कर रहा है। लेकिन मैं आपके एक सेंट्रल थीसिस की तरफ वापस आना चाहता हूँ, एंड द थीसिस इज अबाउट द लो सेविंग रेट्स एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। So, एक तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मे बी समवन फ्रॉम PIDE कैन आल्सो एनलाइटन, कि वो जो हमने ज़ाहिर जो रेशियो इस्तेमाल करते हैं 13% वाली, वो इट डजंट काउंट फॉर आवर इनफॉर्मल सेविंग्स लेट्स से इन रियल एस्टेट, क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर सो कॉल्ड। तो और चूंकि सेविंग्स का ना होने से ज़्यादा बड़ा मसला है कि सेविंग्स कहाँ जा रही है। मतलब आई वुड लाइक टू क्वेश्चन कि हम
हम ये कह रहे हैं कि सेविंग्स कम है, या हम ये कह रहे हैं कि सेविंग्स कहीं और जा रही हैं, राइट? सो सेविंग्स तो लोग कर रहे हैं, और गिवन frankly the inflation environment, Yeah. we have a strong incentives to spend today rather than save for tomorrow. So we can't sort of, every household is oriented towards that. जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बिजनेसेस उस तरह जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो सेव नहीं कर रहे हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात की, और ये कि जो नए बिजनेसेस हैं जिस स्केल पे उनको आना चाहिए वो नहीं है। राइट, और दैट इज आई थिंक द सेंट्रल प्रॉब्लम। यस, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एक्टिवली एग्री करता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक में हमें जरूर देखना लेके चाहिए। आए, हाँ। उसमें बल्कि ये क्या, आई रेज दिस एज अ कंसर्न समवेयर आल्सो पब्लिकली, कि जिस तरह हमने वो लास्ट ईयर एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट एक्ट लेके आए, राइट, जिसमें हमने कहा कि जी $500 मिलियन से ज्यादा की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम 30 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। राइट, So it's you can call it a Recordec law. Yeah. Right? So although it's not named as such, Yes. but it's not called Recordec. So that's all very problematic. But I think we need to go to basics, और जो business environment है जिसपे आपने रेफर भी किया, like your thoughts on that, कि वो जो heritage आपने इंडेक्स की बात की, उसमें वो सारी चीजें मेंशन की हुई हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग द रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, बिजनेस फ्रीडम। आई थिंक दैट्स वेयर टू गो। वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, बिल्कुल सही, सो सेविंग्स हो रही है लेकिन वो मिसडायरेक्टेड है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, दैट्स आई थिंक द फॉरवर्ड। या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह मैंने भी गुजारिश की कि 2 पीसेज है ना उसके, एक तो पूल है, वो जो सेविंग का पूल है, एक तो वो भी काम है हमारा, उसके वेरियस रीजंस है इंक्लूडिंग द फैक्ट के वो पॉवर्टी बहुत है, बट वो मिसडायरेक्ट भी हुई है, तो उसको चैनलाइज करना होना। अच्छा, होर्डिंग स्मगलिंग पे एक ऑब्वियस किस्म का क्रैकडाउन तो अभी हुआ है, और ये चैलेंज अभी आ रहा है कि वो पैसे जो उसको हम, फॉर एग्जांपल अब हमने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर क्रैकडाउन किया है, बड़ा ऑब्वियस है। इशू ये आ रहा है कि वो फॉरेन करेंसी को हम चैनलाइज कैसे करें इनटू द सिस्टम, तो दैट इज द सेकंड पीस। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, मेरे पास का कोई जवाब नहीं है एट दिस पॉइंट टाइम, क्योंकि अब सिवाय एमनेस्टी के और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, बट वो एमनेस्टी जो है वो पॉसिबल नहीं है with the IMF program. So perhaps we all have to put our heads together and see how we can channelize that piece. But the starting point, to be honest, is Salman, is the industrial policy. आज हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर करती भी है इन वन फॉर्म और शेप, और तो वो बड़े पैचेस में है, और वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को या स्पेसिफिक कंपनी को टू द एक्सटेंट ऑफ वो शायद उसको प्रोटेक्ट करती है। वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक वाइडर चाहिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड दे और जो कंपटीशन अलाउ करे। आप जरूर करें ये, मगर फिर हर एक के लिए करें, फिर आप उसके ऊपर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर वो ना डालें, परहैप्स आपको नंबर कम करना पड़ेगा, वट एवर दैट नंबर में भी। मेरे हिसाब से द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपको इन्वेस्ट। अच्छा, मार्केट्स की हद तक अब मैं पहले नहीं कहना चाह रहा था, बट अगर आप वो कह ही दिया तो मैं जरा आपको बता देता हूँ। मुझे बताइए कौन सा, ये किस उसूल के तहत बैंकों ने 27 रुपए बनाए हैं ऑन एफएक्स मार्केट? 100 अरब रुपया बनाया है बैंकों ने, और जो आपके मनी चेंजर्स हैं उन्होंने तो 50 रुपया बनाए हैं। ओके, सो यू सी द पॉइंट इज कि वो तो पेरिफेरीज है ना, बट द इंटरम जो लोग हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे होते तो ये नहीं होता ना। अब वो कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ से आ रहा है कि जी मार्केट नोज एवरीथिंग बेटर। No, sir. It was driven by a major policy misstep from the Which is? It's not that. His policy. No. नहीं। 30 years पहले तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके थे। This the dollar, the interchange, the bank market difference, we did not have that problem. We created that problem. नहीं, वो अभी आप दोबारा देखें ना। It led to the hoarding. It led to the. नहीं सलमान, प्रॉब्लम ये है कि द प्रॉब्लम इज कि आप 3, 4, 5 रुपए तो जरूर बना लें, मगर आप 27 रुपए तो ना बनाए ना। दिस इज द प्रॉब्लम। अब मुझे बताइए, अगर ये नहीं होता तो ये आज वापस कैसे आ गया? आज तो फिर अभी मैं सुबह निकला हूं तो 94.98 पे आ गया। सो अगर वही रीजन होता कि आपने उसको रोके रखा हुआ था और फिर वो एकदम से खुला और वहां चला गया, ऐसा नहीं हुआ ना। 100 अरब रुपया बनाए ना आपने, इसका मतलब है वो 100 अरब नहीं बनाने चाहिए थे, आपको 10 अरब बनाने चाहिए थे। आपने 100 अरब बनाए बिकॉज आपने इस चीज का एडवांटेज लिया, बिकॉज नैरेटिव ये बिल्ड हो गया है
कि मार्केट को मत छेड़ो, जो मार्केट कह रही है वो सब ठीक है। मार्केट गलत कह रही है। मार्केट ये नहीं कह, मार्केट आपको 100 बिलियन बनाने की इजाजत नहीं दे रही, आप 10 बनाइए। वाई यू मेकिंग 100 बिलियन रुपीज ऑन दिस? क्योंकि फिर बाद में सब्सिक्वेंटली वही मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है, 330 रुपए से नीचे आके 295 पे आ जाती है। और इस दफा सागदार नहीं है वहां पर, इस दफा वो कंट्रोल नहीं है उस तरह का, तो फिर भी वो वापस आई। इसका मतलब है देयर वाज सम डिस्टॉर्शन इन द मार्केट, एंड दिस इज व्हाट आई वाज अलूडिंग टू। दिस ऑल आई एम सेइंग इज इट हैज टू बी अ बैलेंस। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप रेगुलेटर जो है ना वो मार्केट को फुल कंट्रोल कर। मैं तो खुद दूसरी साइड पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो खुद नहीं चाहता कि मेरे पास ज्यादा कसगन लगी हुई हो। एग्जैक्टली मैं क्यों चाहूंगा कि मैं, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ बैंक ऑफ पंजाब वाली कहानी। मेरे पास फोन आया मेरी ट्रेजरर का, मुझे कहने लगा सर वो हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने कितना बनाना है, सो आप मुझे बता दें कि आपने कितने पैसे रखने हैं। मैंने कहा यार देखो, दो मैं तुम्हें रीजंस बता दूं। वन, वी शुड नॉट बी द रीजन फॉर द इंक्रीज इन द रेट। Two reasons. One, being a public sector institution, I think it's our responsibility. Secondly, as a good citizen, I do not want to be the reason or finger pointed by somebody that you are the reason जिसकी वजह से रेट जो है ना ये 5 रुपए ऊपर चला गया। अगर कोई और 5 कर देता है तो हम वहां चले जाएंगे, लेकिन हम 5 नहीं करेंगे। दूसरा ये कि एक रीजनेबल लेवल पे रखो। तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारा अपनी बुक की किताब के हिसाब से तुम कितना इसको रख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि जी 3 रुपए होने चाहिए। मैंने कहा आपने 3 से ऊपर नहीं जाना, जिस पे मुझे आज भी मेरा ट्रेजरर गालियां देता है। एंड देन आई कॉल्ड अप द रेगुलेटर एंड आई टोल्ड देम कि लुक, वी हैव टेकन दिस डिसीजन, अगर आप समझते हैं कि ये ज्यादा है तो वी आर हैप्पी, बट इससे नीचे हम नहीं जा सकेंगे। हम तो द रेगुलेटर वाज आल्सो वेरी प्लीज्ड एंड सेड दैट्स गुड, वेरी गुड। आपको हम ये नहीं कह रहे आप क्या करें, मगर अगर आपने रिस्पॉन्सिबली करनी है तो दैट्स मच अप्रिशिएटेड। So this is what the role we played, but the private sector did not play that role. Because probably वहां पर जो था वो मोटिवेशन बिल्कुल डिफरेंट थी, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ रेगुलेटर कम्स हैंडी, दैट दे हैड शुड हैव। सो मेरा सिर्फ आर्ग्यूमेंट यहां तक है कि मार्केट को जरूर प्ले करने दें, बट मार्केट को भी थोड़ा। प्रॉब्लम क्या है सलमान? प्रॉब्लम ये है कि हम ओवरऑल सोसाइटी में मेच्योरिटी लेवल जो है ना वो जरा थोड़ा सा, अब वो बिजनेस में भी ट्रांसलेट होता है, वो अभी भी हम उस मेच्योरिटी लेवल पे नहीं है कि जहां पर, बाय द वे, एक्सप्लॉइटेशन अमेरिका में भी हो जाती, बट वहां पर रेगुलेटर ने आके कई दफा डंडे मारे हैं, नॉट वंस ट्वाइस। पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं। हम, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये ख्याल है कि हम रोज सुबह जो है ना उठ के हम अमेरिका बन गए हैं, बस हमें वो पॉसिबल है। रोका तो किसी ने फाइन करने से, हमें रोका ना IMF ने, स्टेट बैंक को तो किसी ने रोका ना, ये प्रॉब्लम है ना। Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for your very informative session. You have already answered most of my questions. So my question is that globally we have unified large economies. You can see just where the share of service sector is greater than agriculture and manufacturing. So my question is there any importance of pre-economic structure evaluation to build workforce with respect to technology, capability, and resources, and most important, the drivers such as empowerment? Thank you, sir. जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए मसला ये है कि वी एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हम काफी कंफ्यूज नेशन है। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा शायद ख्याल ये है कि हम अमेरिका में रह रहे हैं और रोज सुबह उठ के हमारा ख्याल होता है बस मार्केट को छोड़ दो यूं खुला। अभी मैं सलमान से भी बात कर रहा था कि बस खुला छोड़ दो, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। नो 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 नो, वी आर नॉट, सो वी नीड टू ड्राइव थिंग्स थ्रू। आज भी हम बड़े कंफ्यूज हैं इस चीज के ऊपर कि हमने जो है वो किस सेक्टर को प्रमोट करना है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये माइंडसेट किस किस्म का है कि जी सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट जो है वही एक्सपोर्ट है, and you do not have that service. In fact, I was listening to some economist the other day, probably Dr. Mia, आतिफ मियां ही फरमा रहे थे कि एक्चुअल जो आनी है आपके पास, जो ग्रोथ आनी है आपके पास, वो आनी है सर्विस सेक्टर से। और वो उन्होंने फिर एग्जांपल कोट की इंडिया की, which I completely agree with him, कि वो जो DNA हमारा और उनका तकरीबन सेम ही है। तो उनके यहाँ देखें कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने किस तरह ग्रोथ शो की है, एंड द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हैज बीन। हमारे यहाँ आज भी कंफ्यूज है कि हमने कहाँ से लेके आनी है ग्रोथ। एंड जिस तरह ये फरमा रही हैं सादिया,
We need to drive all our efforts in that direction. और वो नहीं हो रहा. इंडिया ने वो काम आज से 2 decades पहले कर लिया था. बांग्लादेश ने वो काम आज से 2 decades पहले कर लिया था. Of skill set building, which resulted in then, today they're driving in a focused fashion on a particular sector. जहाँ वहाँ textile हम देख रहे हैं, यहाँ हमने वो काम नहीं किया, and that's why our exports are stagnant as well and struggling. So completely agree with you. We need to drive our policy actions in that direction. जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं हिजाजी, डॉक्टर हिजाजी बोल रहा हूँ. Zafar Masood साहब का माशाल्लाह, it was a very good presentation. बहुत आपने अच्छी बातें की हैं और I really, it's impressive that we have very good bankers like you. आपकी जो especially you talked about interest rate and just a second, interest rate and my video has been stopped by the host. अच्छा जी, interest rate की जो आपने बात की है, that is something very important, क्योंकि हमारे basically जब हम उसको cost push inflation को हम interest rate से monetary policy, जैसे आपने अच्छा criticize किया, monetary policy से हर चीज को handle करने की कोशिश करते हैं, तो problem ये आ रहा है कि it's a cost push inflation. जो आपकी कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है तो वो आपकी इन्फ्लेशन का सोर्स बन रहा है, एंड सो ऑन अदर थिंग्स. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरेस्ट रेट और आवाम का तो लिंक ही नहीं है. 16.5% डिपॉजिटर्स हैं आपके पाकिस्तान में. मैं अपने ड्राइवर से पूछता हूँ कि जी भाई इंटरेस्ट रेट 21% हो गया, तुम तो बड़े अमीर हो गए. वो कहता है वो क्या होता है, क्योंकि उसको क्या पता है इंटरेस्ट रेट कहाँ है, बैंक कहाँ है, एंड सो ऑन. सो ये एक तो बड़ी हैरत है कि बड़े सीनियर लेवल पे ये कंफ्यूजन है कि जी हर चीज़ का हल मॉनेटरी पॉलिसी से होता है. दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो डिस्कशन हमारी चल रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की. जितना लिटरेचर हमने पढ़ा है फॉर द लास्ट 40 years, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ग्रोथ के ऊपर. बहुत सी डिस्टॉर्शंस की बातें हुई हैं, बहुत सा लिटरेचर. अभी भी मैं 3-4 आर्टिकल्स आपके इस लेक्चर से पहले मैंने गो थ्रू किए जो रिसेंट है, 2017 के हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे जो भाग रहे हैं, एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इल्यूजन्स के पीछे भाग रहे हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में प्रीवियसली आई है, मतलब कार इंडस्ट्री की आई है, तो उसने एक्सपोर्ट को नहीं टच किया. हमारी गाड़ियां जो है एक्सपोर्ट नहीं होती. तो हमें क्या फ़ायदा हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कि हमने अपनी कंजम्पशन जो है लोकल कंजम्पशन के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके स्पेयर पार्ट्स फिर बाहर से आते हैं. तो वही हुआ है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत वो कंट्रैक्ट हो गया है इसी वजह से, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन गलत थे. IPPs इज़ अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल कि हमने एग्रीमेंट्स ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कर लिए हैं जिसने हमें बिल्कुल जकड़ के रख दिया है, और हम कहते हैं जी सर्कुलर डेट एंड सो ऑन सो फोर्थ. हमारा प्रॉब्लम बेसिकली गवर्नेंस का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. आप रेगुलेटर्स की बात करते हैं, रेगुलेटर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलेटर होता है, और रेगुलेटर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो रेगुलेट कर सके, वो अंडरस्टैंड कर सके कि वो किस तरीके से है. अब IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पब्लिक किया जाए, लेकिन पब्लिक नहीं करते क्योंकि बहुत सी गलतियां की हुई हैं. और मतलब अगर शॉर्ट रखें क्योंकि वी हैव टू, काफी सारे लोग बोलना चाह रहे हैं. श्योर. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं, शॉर्ट टर्म का IPPs का प्रॉब्लम है. इसलिए आई वेरी स्ट्रांगली से कि आप जो भी एनालिसिस करें, एक बात ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी फर्स्ट इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, और आपको गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना है, तब जाकर आप बाकी पॉलिसीज जो हैं उसके ऊपर वो कर सकेंगे. एक लास्ट पॉइंट पे ये करूँ कि देखिए मिचेल्स पाकिस्तान में आज से 70-80 साल पहले आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और मेरे ख्याल में 40 साल लगे लोकल कैचअप बनाने वाली कोई इंडस्ट्री. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई डायरेक्ट इस तरीके से बेनिफिट नहीं हो रहा. थैंक यू वेरी मच. ये इजाई साहब, ये तो आप मतलब मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ जो आप चीजें फरमा रहे हैं. जो मॉनेटरी पॉलिसी की भी आपने बात की, वो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको नहीं पता इसका,
बट जो जो डायलेमा है वो ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टूल बड़ा आसान टूल है टू ट्राई एंड फिक्स आवर प्रॉब्लम्स। जो मुश्किल टूल है फिस्कल का, उसको हम टच नहीं करना चाहते फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड अदरवाइज। तो इसलिए हम जो है ना वो प्ले अप करते रहते हैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पेरिफेरी टूल है। द रियल जूस, अब मेरा तो उस पर आर्टिकल भी है, आई डोंट नो सलमान ने देखा कि नहीं, वो इट्स ऑल इन फिस्कल अकाउंट। हमारा फिस्कल अकाउंट जो है वो ऑल इन, मैंने दो सेंस में उसको यूज किया है। एक तो वैसे ही वो एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है, और दूसरा ये कि वो अब उसके अंदर मजीद रूम नहीं है, अब आपको उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सलमान ने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया तो मैं अब मैं कोट ही कर देता हूँ एग्जाम्पल एक और। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आपको फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? ऑल्दो इट्स वो आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी नॉन कैश है। भाई वो कैश कहीं पर इन द सप्लाई चेन आ जाता है, बिकॉज या वो बेचारा ओजीडीसी उसको बेयर कर रहा है, या वो आप इंपोर्ट की सूरत में एलएनजी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि गैस इज फंजेबल। जब वो सिस्टम में आ जाती है तो वो फंजेबल है, फिर वो कहीं ना कहीं से आप उसके पैसे दे रहे हैं। तो डायरेक्ट आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, इम्प्लाइड सब्सिडी जरूर दे रहे हैं। आपको वो इम्प्लाइड सब्सिडी देने की जरूरत फर्टिलाइजर कंपनी को नहीं है, आपको वो डायरेक्ट सब्सिडी देने की जरूरत है टू द फार्मर्स। द इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट द फार्मर, एंड दैट आल्सो हैज टू बी ड्रिवन इन द डायरेक्शन कि जो सब्सिडी है वो इस डायरेक्शन में हो कि आप क्वालिटी फर्टिलाइजर यूज करेंगे, और सब फर्टिलाइजर से भी ज्यादा आप क्वालिटी सीड यूज करेंगे, विच इज द कोर ऑफ आवर प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑन द एग्रीकल्चर साइड फॉर एग्जांपल। सो यू नीड टू शिफ्ट योर थिंकिंग। जिस तरह मैंने अपनी टॉक जो एंड की है, वो एंड ही इस चीज पे की है कि जो हमारी सब्सिडी का पूरा सिस्टम है, जिस तरह हम एक जमाने में, जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस वक्त हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जो महवर था और सोल्यूशन था, वो कंप्यूटर में जब फंस जाता था तो वो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट हम दबाते थे और फिर स्टार्ट करते थे तो शुरू हो जाता था। तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ा, आई थिंक it requires alt control delete now on the subsidy side, and we need to think it differently rather than giving it to the way we are managing it right now. It has to be thought through, and it's to be direct subsidy, not indirect through the large corporations. Assalamu alaikum ji. Umar Siddiq मेरा नाम है. I'm a senior research economist here. Recently I'm working on domestic commerce और especially retail and wholesale पे. एक तो अभी आपने आतिफ मियां का जिक्र किया कि उन्होंने सर्विसेज सेक्टर का कहा कि दैट वुड बी इंजन ऑफ ग्रोथ. डॉक्टर नदीम 2006 से ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक अमरीकी ने कहा है तो शायद गवर्नमेंट सुन ले, अदरवाइज वी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर, नहीं, हम उनको भी नहीं सुनेंगे, आप फिक्र ना वी हैव करें। बीन आर्ग्यूइंग फॉर डोमेस्टिक कॉमर्स. मेरे दो तीन ऑब्जर्वेशंस हैं और आपकी ओपिनियन चाहिए. एक तो आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पे ये आधार कार्ड और ये डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 45% इनफॉर्मल में आती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उन्होंने वो सारे वो चैनल्स शुरू कर दिए जिस तरह वो इश्तिहार आते हैं कि जी आप वो गूगल पे से वो पेमेंट करें, और दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो फॉर्मल सेक्टर में है. तो एक तो ये है कि आपने सेविंग्स की बात की. पाकिस्तान में सेविंग्स, हमने जो सर्वे किया उसमें इस्लामाबाद पिंडी में 50% ऑफ द रिटेल एंड होलसेल एंटरप्राइजेस हैव कमेटी सिस्टम, और Right. उसकी जो पॉट है वो 2 करोड़ तक भी जाता है. Right. तो वो इसमें आई थिंक जो हमारी फिक्सेशन है कि हमने इसको इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में लेके आना है, वो चैनलाइज नहीं होने देती सेविंग्स को उसमें. मतलब आपने वो बात की कि वो एक माइंडसेट है, एक वो रिलीजियस फैक्टर भी है, लेकिन आई थिंक वो पेरिफेरल है. हमारे यहाँ पे ज्यादा हुआ है कि हम जब से ये फिक्सेशन नहीं होंगे कि ये फाइलर है या नॉन फाइलर है, सही. हम ये रोते हैं जी कि 90% जो है वो रिटेल सेक्टर वो है वो इनफॉर्मल है. उसकी रीजंस नहीं देखते हम. उसकी रीजंस यही है कि वो उसमें वो अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो 0.6% आपने वो देना है, उसने करना है तो 0.3. अभी रिसेंटली अगेन फॉर दिस स्टडी मैंने ये देखा कि ये वो स्टार्टअप्स कुछ आए हैं जो डिजिटल फाइनेंस दे रहे हैं. वो फॉर एग्जांपल पैकेजेस ये यूनिलीवर और उसके दरमियान वो एक सप्लाई इंटरमीडिएट चेन, हाँ. का काम करते हैं. वो उनसे डायरेक्टली लेते हैं, अपना प्रोडक्ट लेते हैं और ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, विच इज इनफॉर्मल. वो उसका कोई वो नहीं है वो. तो
हमें ये इस चीज से निकलना होगा। आई वुड लाइक योर थॉट्स। और हमारा जो इंटरेक्शन था उसमें ये था कि जो रिटेल सेक्टर के लिए कोई बैंकिंग प्रोडक्ट्स एज सच नहीं है, अगर हैं भी तो उनकी वो सेम स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स है कोलैटरल्स की, और फिर वो और डर है कि वो जब एक दफा फॉर्मल चैनल में आएंगे वो फॉर्म भरेंगे और एफबीआर उनके आके सर पे खड़ी हो जाएगी। तो I would, बिल्कुल सही like फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ आपका वो उल्टा करूंगा ऑर्डर, जो आप रिटेल सेक्टर की बात करें। पहला जो है वो ये कि दे डोंट वांट टू बी इन द प्रोडक्ट वाला पीस है, वो तो सेकंड है। जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल करना है वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो रिटेल सेक्टर का प्रॉब्लम है, या एसएमई आप कह लीजिए, माइक्रो एसएमई कह लीजिए, इनका जो प्राइमरी प्रॉब्लम है ना, वो ये कि दे डोंट वांट टू बी इन द सिस्टम ऑफ द फॉर्मल सिस्टम। अब वो फॉर्मल सिस्टम की मैंने बात की बड़ी तफसील से कि क्या क्या वो रीजंस हैं। उसमें हरासमेंट का एलिमेंट भी है जो जेन्युइन है, बट देन देयर इज अच्छा, पता है मसला ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है डॉक्टर साहब। पर प्रॉब्लम ये है कि यू आर अ डॉक्टर, राइट? ओके, सो माय अपॉलॉजीज। ये लोग मुझे डॉक्टर कहते रहते हैं हर वक्त। मैंने कहा जी मैं एमबीबीएस डॉक्टर तो हो सकता हूँ, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो यू नो दिस इज द फैक्ट इज के यू नो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वीक, एंड ये टैक्सेशन का पूरा सिस्टम जो है ना, ये उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक कि आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो मुनासिब ना हो जाए। अब वो चिकन एंड एग सिचुएशन है कि क्या वो पहले सोसाइटी उस पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी या पहले उस पर गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी। बट हैविंग सेड दैट, वो जो ना देने वाला या टैक्स इवेजन वाला मामला है ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में आके फॉल कर जाता है और फिर उसके आर्गुमेंट बन जाता है। पॉइंट हियर इज कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आप सरकार से ले रहे हैं, आप कम से कम उतना शेयर तो टैक्स का दें, बट हम वो भी देना नहीं चाहते। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम विद द the product problem is secondary, the primary problem is that they don't want to be in the system. और अगर वो सिस्टम में आ जाते हैं ना, तो जो आपका प्रोडक्ट डेवलप करना है वो भी बैंकों के लिए आसान हो जाता है। हमारे लिए टू डील विद समबडी इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज इम्पॉसिबल, सो वी नीड सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन व्हिच दे आर नॉट विलिंग टू प्रोवाइड। नादरा, यहाँ पे सीएनआईसी जो है, अगर हम उसको कर लें तो जी वो कर लें, बिल्कुल। that would solve most of the problems दैट्स करेक्ट। you're talking about कि जी, आपको जी। कोई ना कोई चाहिए तो सीएनआईसी should be the सफाइस। yes. बल्कि इनफैक्ट वो आधार में तो उन्होंने अलग कार्ड बनाया और फलाना किया, दिस मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, वी कैन मेक इट मच इजियर। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी दिस इज डॉक्टर मोहम्मद ईशान, आई एम रिसर्च फेलो एट पाइड। तो मेरा सर अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है, इंटरेस्ट रेट स्टेज एट 22%। तो स्टेट बैंक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि क्रैकडाउन से क्रैकडाउन विल बी हेल्पफुल टू फॉर द स्टेबिलिटी। मतलब फर्स्ट तो एक तो स्टेट बैंक के खिलाफ बात करके मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। तो सर अच्छा जी। न्यूज़पेपर मैं पढ़ा था तो उसमें से जी। तो मुझे नहीं पता कि जो क्रैकडाउन है स्टेट बैंक कंसिडर इट वेरिएबल और समथिंग, इट्स नॉट अ वेरी रिलायबल वेरिएबल, राइट? स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसपे उसको मार्केट के फंडामेंटल्स पे बिल्कुल बेस्ड सही। अभी लेट्स से कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट या सेविंग रेट 22% है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है इट शुड बी हायर देन 22%, इट शुड बी समथिंग बिटवीन 25 to 30%। एक रीजनेबल बिजनेस नहीं, वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से, नहीं, तो मैं प्रोजेक्टेड बात इन्फ्लेशन 26 है, तो आपका आज सेविंग रेट 30 होना चाहिए। हाँ, तो लेट्स से कि अगर एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है इट शुड बी समथिंग लाइक 30%। हाँ, सही है, इन कंपैरिजन टू द बैंक डिपॉजिट, सही है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात जी जी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर लेट्स से कि मैं या मेरी फैमिली में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस है जो आपको इतना रिटर्न दे सकता है? देयर इज नो बिजनेस। मैं भी ढूंढ रहा हूँ वो बिजनेस, आप भी ढूंढे हो तो प्रैक्टिकली आप जो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली आई एम हैपन टू बी इन दैट बिजनेस। ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज यहाँ से आ रहा है क्योंकि यू नो हम अभी तक आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। शायद इंटरेस्ट रेट्स जो है ना, वो हिजाजी साहब ने भी बात की कि जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, वो गालिबन आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में उतने आप सूदमंद साबित नहीं होंगे जितना होना चाहिए, बिकॉज इट्स सप्लाई साइड। तो आई थिंक वो अगर उस पर हम कन्विंस कर लेंगे तो फिर चीजें ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, वो
ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएंगे. आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइम दिस इज वेयर इट इज ड्रिवन फ्रॉम. और दूसरा मेरा सर थोड़ा सा मैं आपसे कंट्राडिक्ट करना चाहता जी हूँ. जरूर. आपने जैसे कि बताया कि सर्विसेज सेक्टर इज प्रेजेंट ऑफ द फ्यूचर. आई थिंक इन द करंट ये मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर आतिफ मियां ने कहा है. हाँ हाँ बट मैं एग्री करता हूँ. सही है few fair. people say that. जी. If we look at the current atmosphere, global dynamics, तो फ्यूचर में तो अभी प्रेजेंट में तो रोबोट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहे हैं. एडिटर्स विल बी रिप्लेस्ड वेरी सून, एज मैनी अदर सॉफ्ट जॉब्स. इंडस्ट्री की बात करें, रोबोट्स और बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर robots, software, AI, artificial intelligence. The future में services sector will shrink because of the both developments, soft developments and the software and the hardware developments. तो मेरा जो point of view है वो है कि IT is the future of any industry. वो भी सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा. सो दो चीजें हैं इसमें डॉक्टर साहब. एक तो ये कि जो फॉर्म एंड शेप है ना सर्विस इंडस्ट्री की, वो चेंज हो जाएगी. तो सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर जब मैं कहता हूँ तो वो वही रहेगा. दूसरा, जो अगर आप एक्चुअल नंबर्स देखते हैं ना, मुझे अच्छी तरह याद है जब कंप्यूटर आए थे, हम उस वक्त नए नए काम करना शुरू किया था, लोगों को बड़ी थ्रेट थी कि ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी फलाना. दैट डिडंट हैपन बिकॉज फॉर्म एंड शेप चेंज हो गई, स्किल सेट चेंज हो गया, बट दैट रिक्वायरमेंट इज स्टिल देयर. सो द ओनली, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड ये करूंगा कि सर्विस सेक्टर से बियॉन्ड हमारे केस में जो एक अनचार्टेड टेरिटरी है और जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी है. एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ रिलेटिवली लो हैंगिंग फ्रूट जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं इफ वी गेट आवर सब्सिडी स्ट्रक्चर राइट. आई थिंक आवर सब्सिडी स्ट्रक्चर इन दैट एरिया इज slightly lopsided. There are other issues also, you know, land ka size and all, but nevertheless, I think that is a big opportunity. Why are we always so obsessed with low-hanging fruit? And the second is investment framework of Pakistan. Do you think it's a friendly environment or not? And if it's not, then why do we need an SIFC on top to make it friendly? दूसरा वाला तो बड़ा आसान है, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ. बिकॉज इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए एसआईएफसी की जरूरत है. सो इज अदर वे अराउंड. अगर फ्रेंडली होता तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो मार्केट ड्रिवन होता, काम चल जाता. जो पहला, सॉरी, आपने क्या फरमाया था? So obsessed with low-hanging वो मैं fruit. आपको बता देता हूँ. और बाय द वे वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, बिकॉज हम फिर शॉर्ट टर्म ही सोचने लगते हैं. इशू ये है कि लो हैंगिंग फ्रूट हमें क्यों चाहिए, बिकॉज अगर हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और हमें डिपेंडेंस, डॉक्टर साहब विल लव इट, अगर डोनर्स की डिपेंडेंस से निकलना है और आईएमएफ के शक्ल से ग्रेजुएट करना है, तो उसके लिए हमें ये लो हैंगिंग फ्रूट्स को टैप करना पड़ेगा ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर हम उनके उस, लेकिन दैट डजंट मीन, एंड थैंक यू फॉर raising this point because I want to emphasize this, that doesn't mean that we lose the sight of the ball as far as our medium to long term policies are concerned, especially in the energy sector. Bukar Qasim from PIDE. Thank you so much for your nice talk. अगर मैं देखूं आपकी talk का जो main crux था वो था कि we have to change our lifestyle, but the point is how to change the lifestyle. I would like your comments on this because in my opinion one way could be to get inspiration from your heroes and success stories. सही बात है. तो अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हीरोज देखूं तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. अगर बिजनेस कम्युनिटी में आप देखते हैं जो सक्सेस स्टोरीज हैं, हम यहाँ उनको लेबल करते हैं कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग ठीक नहीं है. ठीक है, बिकॉज कि हमारे पास रेगुलेटरी बर्डन ऐसा है कि एक बंदा जब एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चलता है सक्सेस में, तो वी नो कि वो बर्डन ओवरकम करने के लिए आपको, जिसको हम कहते हैं कि फाइल्स को पहिए लगाने पड़ते हैं. सेकंड पॉसिबल वे इज एस्पायरेशन, कि हमारा जो यूथ है उसकी कुछ ना कुछ ड्रीम्स हो, कुछ हो. हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लास्ट ईयर एजीएम में 70% ऑफ आवर यूथ वांट्स पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, राइट, कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं. राइट. तो वो एस्पायर नहीं है हमारी यूथ उसमें. तो कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी नहीं है जिनसे हम इंस्पायर हो सके, और ना कोई हमारे ख्वाब हैं, तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल कैसे हो सकती है? बहुत अच्छी बात की आपने. एक तो पहला यही है कि हमारे पास हीरोज बाय द वे हैं, बट हम उनको हीरोज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो जो हीरो होता है ना, उसके लिए बेहतर है कि वो 40-45 साल की उम्र में मर जाए तो वो ठीक रहता है. वो जहाँ 50 साल क्रॉस करता है हम उसको जूते मारने शुरू कर देते हैं. सो ये लकी फॉर
people like Nusrat Fateh Ali and all के जो जल्दी चले गए, वरना आज हम उनको भी जूते मारे होते. This is what our dilemma of a society is. मैं जब लाइफस्टाइल की बात करता हूँ ना, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि माइंडसेट चेंज करना है हमें. अच्छा, माइंडसेट चेंज करने का मतलब ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट आवर हीरोज, व्हाट द राइट हीरोज आर. और जिस तरह मैंने इंडिया की आपको एग्जांपल दी कि वहां कंपटीशन ये चल रहा है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है या आपका बच्चा, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. सो इट इज नॉट जस्ट द लाइफस्टाइल चेंज का मतलब सिर्फ ये. अच्छा, मैं एक और मजे की बात आपको बताऊं. लाहौर में आई ग्रो अप एंड लाहौर में हमारे पास दूरदर्शन आया करता था. तो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री को तो शायद इतना ज्यादा एक्सपोजर इंडिया का नहीं था, हमें जरा ज्यादा होता था लाहौर में जो रहते थे. तो वहां पर वो हम खूब हमारे जो इंडिया में रिश्तेदार रहते थे, हम उनका मजाक उड़ाया करते थे कि यार आप अपने प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं, वो उस गाड़ी में बैठते हैं जिसके दरवाजे उल्टे खुलते हैं, याद है आपको, एम्बेसडर. और आप हमें देखिए हमारा क्या लाइफस्टाइल है. अभी जो ये हुई है G20, उसमें टॉप ऑफ द लाइन A8 300 Audis उन्होंने मंगवाई हैं just for this event alone. Now, this is what I talk about, the change in lifestyle for the future, this thing of it. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि we think short term, और उसमें सोसाइटी का इशू भी है, उसमें गवर्नमेंट का इशू भी है, उसमें ओवरऑल एक हमारा माइंडसेट भी बन गया है, सर्टेन वे में हम ग्रो अप हुए हैं. And I think that is something which is essential. Frankly, economic issues are secondary. It's the social issue. Our problems lies in the societal problems, not the economic problems. अगर हमारी societal issues ठीक हो जाए, तो हमारी economic issues will start falling in place. This is what I would say. Very good. Thank you, Dr. Saab. I think excellent talk. Very good points. I fully agree with you. The culture. I would go further. Lifestyle से culture. For example, हम modernization को क्षति नहीं करना चाहते. Yes. अभी तक देखें, हम हिजाब की तरफ जा रहे हैं, गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे जाने की. तो हमारी सोसाइटी की जो सारा डिजायर है पीछे जाने को, आगे जाने को नहीं. And we worship symbols of the past. हीरो कल्चर को नहीं, बट वो कल्चर है क्योंकि हमने पीछे जाना. सऊदी अरेबिया जाना है, सऊदी अरेबिया उधर जा रहा है, Exactly. जा रहे हैं. Exactly. ये हमारा मुसीबत है. दूसरी जो हमारी मुसीबत, जो आपने बिल्कुल ठीक है कि टेक्नोलॉजी तो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. फॉर अस टेक्नोलॉजी इज समथिंग आउटसाइड अस. जैसे सब लोगों के पास सेल फोन है, मैं देखता हूँ किसी को सेल फोन इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ कॉल करते हैं. बड़े बड़े महंगे सेल फोन, बट दे डोंट नो द पावर ऑफ दिस. तीसरी चीज जो है, जो हम बिल्कुल इस्च्यू कर रहे हैं, जो आपके सेक्टर भी सब इस्च्यू करता है. I mean, the banks have no research. And No. we have no research anywhere in the country. And quite frankly, education को तो हम सारा करते हैं, but education सच के यार जाओ बच्चे, सिंगल नेशनल क्रेडिट पढ़ लो, 2 सिपारे पढ़ लो, then we want them to be productive. तो हमारी contradiction बहुत ज्यादा है. जी. I don't know whether you agree or not. 100% sir. Contradiction. Education दे दो, 300 यूनिवर्सिटी बना दिया, 0 प्रोफेसर. हमने इसमें लिखा दिया कोई प्रोफेसर, 0 प्रोफेसर. और आप चले जाएं रिसर्च, कोई रिसर्च नहीं. हुकूमत ये धारा बनाता तो है, पर फिर हमें रोज कहते काम ना करो. बच्चों को फॉल्स डिग्री दे दो, और मैं बच्चों को कहता हूँ, ये सारे बच्चे बैठे, मैं कहता हूँ भाई आओ डिग्री ले लो, जाओ, मुझे तंग ना करो प्लीज. मैं सर नहीं खपाने को तैयार. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. द प्रॉब्लम इज द किड्स आर नॉट इंटरेस्टेड. दे डोंट वांट अ डिग्री टू गेट आउट. ये जो कल्चर है, इसको कैसे चेंज करें? आपके जो वडेरे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ रीडिंग. दे डोंट रीड. मैंने कैबिनेट में बैठा हूँ, कैबिनेट का एजेंडा रात को आता है, कोई नहीं पढ़ता. डिस्कस हो जाता है, रिको लेके जो गलती किसी नहीं पढ़ता, जो भी बजट की सही की किसी ने नहीं पढ़ा. It's not the market or the government debate in my view. In my view, it's a debate of habits. जो हमारी मेरा एक उस्ताद था, जो बन गई है उस्ताद, वो उसने अपना सेक्स टेप, उसको मैं लेके गया था, उसने वेबिनार दिया था. वो उसने किताब 3 वॉल्यूम सेट लिखा है, बुझिया और बुझिया वैल्यू, बुझिया जैसे करा. वो कहती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज़ द ब्रिटिश वैल्यू सिस्टम. Exactly. आप गोरे की वैल्यू सिस्टम देखें, हमारा वैल्यू सिस्टम है. गोरा जो करता था छोटी छोटी चीजें, जो ड्रेसअप करके आता था, डिसिप्लिन रखता था, वो है. हमारे में तो वो नहीं. हमारा वो जो बटेरा है, तो शलवार कुर्ता पहन के ना, वो अपनी दाढ़ी छोड़ के 11 बजे उठेगा, या प्राइवेसी भी 11 बजे उठेगा, 12 बजे कुछ करेगा. क्यों ये सब ये मैटर करते भी नहीं होते. सो इट्स नॉट अबाउट मैटर मार्केट्स और जस्ट वी आर अ बैकवर्ड लुकिंग कल्चर. वी वांट रियासत खत्म होगी बात. Nothing against Riyaasat Medina. Riyaasat Medina was great. Islam was great and still is great. But the problem is what we are picking up is historical issues, not Islam. It's not Islam.
Hijab is not Islam, Dadi is not Islam, Islam is something else. ये जो मुल्लाइज्म को हम सल्यूट कर रहे हैं, it's creating a industry economy and create कर कितना पैसा उसने बनाया कर रहे हैं, कितना अपनी ट्रांजैक्शन तक बनाने हैं, ये सब बातें भी तो अपनी जगह ये सही टाइम पे बजा है वैसे आपकी तो ये सिचुएशन है जी. So last word to you, then you close. डॉक्टर साहब मैं आई कांट अग्री मोर विद यू ऑन दिस. आपने उसको बहुत अच्छी तरह आर्टिकुलेट कर दिया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था. Totally agree with you. It's a when I say societal issue, it's actually the issue of the mindset and the way you put it. It's but everything else is secondary. But Dr. Sahab, if you look at history, मैंने तो नहीं पढ़ी हुई, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, अली बहुत पढ़े लिखे आदमी, आपकी ये टीम बड़े पढ़े लिखे लोगों की बैठी हुई है. हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जो कौमें चेंज हुई हैं, आपने ब्रिटेन की बात की, इसलिए मैंने खास तौर से उसका ये यूएस की देखें तो ये प्रेशर कम्स फ्रॉम द सोसाइटी. द प्रेशर जो है ना, वो लीडर्स जो हैं वो सोसाइटी में से निकलते हैं. हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो लीडर आके सब कुछ चेंज कर देगा. आई थिंक आई वेरी सॉरी, आई वुड टेंड टू डिसएग्री विद दैट. इट इज अस हु नीड्स टू चेंज. अच्छा, ये वडेरा जो आप कह रहे हैं ना, ये वडेरा एज सच नहीं है, ये वडेरा माइंडसेट है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और वो वडेरा माइंडसेट मुझ में भी है, वो शायद आप में भी है, वो शायद अली में भी है और किसी और में भी है. तो वी ऑल हैव टू डू दैट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर ओन थॉट प्रोसेस एंड सी कि यार हमें उसको किस तरह ठीक करना है. एज अ सोसाइटी we have a problem. The problem lies in our own self than anything else. If we as a collectively society start thinking beyond our nose, हम आज कूड़ा उठा के अपने घर से बाहर फेंक देते हैं बिकॉज हम सिर्फ अपने घर की फिक्र कर रहे हैं. हम ये फिक्र नहीं कर रहे कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा in terms of environment on us and our future. This thing अब हमें वो उस चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा. वर्ल्ड इज नाउ बिकम एन इंटीग्रेटेड प्लेस एज वेल. और एक जगह आप इफेक्ट होता है, दूसरी जगह उसका असर आता है, जिस तरह हमने अभी देखा यूक्रेन के केस में. सो देयरफॉर it is us who needs to be changed at our individual level and do not look towards leaders to fall from heaven to come and fix things for us. We have to fix things for ourselves. And that's when I said we are a confused nation, we are a confused society, and this is and we need to be very clear in our minds that we have to fix ourselves. अगर हम आपस में खुद अपने ताईं ठीक होना शुरू हो जाएं तो I think the overall society will be a different society altogether. सर हम ट्विटर स्पेसेस करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं. वन थिंग वी नोटिस, कोई नहीं आना चाहता. अगर आप वो करा दो, एक खाना करा दो और माशाल्लाह जब बुरी करा दो, Absolutely. वो पॉलिटिकल लीडर्स को सिर्फ सुनने जाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं. Yes. बात नहीं करना चाहते. फॉर एग्जांपल मैंने कल 2-3 दिन पहले ट्विटर पे एक चीज डाली. मैंने कहा जी पैसे आपने लिए, आप पैसे वापस करो. Yes. बच्चों ने मुझे कहा बुढ़े मार क्यों नहीं जाता, तुझे तकलीफ क्या है, हम नहीं देंगे पैसे, हमने तो लिए ही नहीं. इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है मुल्क. Yes. They have no idea, they have Yes. no clue. No. They don't even want to know, they just want a poor degree. Yeah. इनको ये नहीं पता कि लोन हमें वापस करने हैं. Yes. कैसे हम नहीं वापस करेंगे क्योंकि हमने नहीं लिए. यानी किस दुनिया में रह रहे हैं. Yes. इनके नाक से निकलेंगे. Absolutely. इनके नाक से They don't have a choice. गोरा छोड़ेगा नहीं. Yes. गोरा इनसे एक एक चीज निकलवाएगा और ये रोते फिर हमने नहीं लिया, हमने लिया. वो भी किस किस्म के लोग हैं हम. प्लीज मुझे समझाएं. आप सही कह रहे हैं कि यंग जनरेशन को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है जी. फिर कहते हैं हमें वजीफे दे दो. अच्छा मेरे पास आते हैं जी कि मुझे दे दो वो क्या होता है जी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ले ले, सिर्फ इस तरह मेरे साथ काम कर ले. कहते काम भी मैंने करना, मुझे पैसे दो. गोरा जब नीड बेस्ड लेता है ना, Yes. तो वर्क स्टडी कहता है. Correct. हम नीड बेस्ड, हम इंटरनेट Right. लगाते हैं, कहते काम ना करो बस Yes. बैठ जाओ. Yes. आपने पूरी कौम को एंटाइटल्ड कल्चर बना दिया. बिल्कुल ऐसे. बेस्ट पॉलिसी. जी. और ये किसने बनाया देखिए ना, ये आके उसने वर्ल्ड बैंक वाले ने बनाया और हम लोग उसकी पूजा करके हम लंगर खोल देंगे, ये कर देंगे, काम नहीं करवाएंगे. अब इस वक्त कायदन यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा काम नहीं कर रहा. Yes. नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले. तो हर हम कौम बन गई तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. Yeah. So you're absolutely right, it's lifestyle, it's change, but we are a change in this generation. Zafar sahab, thank you very much. शुक्रिया Great सर. Thank you pleasure for to the have you opportunity. बहुत Please शुक्रिया. stay in touch with PIDE and please come. Absolutely. Anytime, whenever PIDE wants me, I'm Whenever there. you are in Istanbul, let us know. जरूर. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. you very much. Please, thank you.